and behave properly. Class is being recorded. So I don't want any random comments. All right. So today we will be having a discussion on the topic whether history, the subject history, should be extracted from the educational curriculum or not. Okay. So we have for the motion and against the motion students. I hope you all are prepared for the discussion. And let's start the discussion. Who will start it? Do I need to point out, or do you have the points that you like to start? For the motion, we come and we will starting. Okay, let's start from here. Yes, comparison between the origins and development of several different ideas and perspectives and practices and theories and principles of education that was already happened in the past that we should have to know, or other next generation will also have to know about that. Okay, so basically her point was it provides a profession for the people, for the teachers, and it also provides a basic knowledge of what all things have been done and how the things started from the past. Yes. Next. It should be continuous. Yes, tell you. Okay, it helps us understand how things have been in the past and create a better future. Anyone else? There is complex relationship between these and this is flavor and textbook have been part of the political controversy. So basically, it is something that we can learn from, and it is a cultural reference from our past, and it refers back to all the things that we are in a habit of doing, and it represents our uniqueness from others. Okay. Anybody else? Good evening, everyone. I am Akanksha, and my point is the primary reason why I believe it is essential is that the past can often provide explanation and solution for the situation we face today. And my second point is there were a great number of mistakes made by previous government and the leaders. By studying the historical events, some similar problems could be avoided. If they happen again, it may take shorter time to resolve them. Okay, so basically we are learning from the past, so that repetition of those events can be, antisocial events can be reduced. Next. Good evening, everyone. The discussion is going on. The history should be removed from the curriculum or not. I should make a favor of history should be considered because history helps to understand changes. It helps young people understand their own culture and how their culture and practice have evolved. People
Similar points. Anyone else? Any other points? Yes, do others have the points or not? Sorry? Bit interpretation. Okay, analytical and interpretation skills. Okay. Yes. That we can also have to formulate ideas and patterns and principles and provide a larger perspective and understanding our own educational system and making comparison within a historical perspective and satisfying intellectual curiosity and exposing one to knowledge the other field of view. Okay. Anybody else? Yes. So that we can better understand and how it works now. Okay. Others? Yes, what is your point? Topic is whether history to be accepted from curriculum or not. I like to favor that point. History can guide learners to see trends and process in a broader context. It appreciates holistic perspective and understand that. History can contribute towards the development of critical awareness in learning. Okay, it can be in help in learning the pattern of different variations in different sectors and the innovations that we can do from the past journeys. Any other students? History allows us to learn from the past and help us to Okay, it helps us to understand changes. You should be visible. You should be visible. teaches us how to learn from mistake of others and also improve our decision making and judgment. Yes, improvise our judgment making skills, decision making skills. Yes, anyone else? There is totally human. Because it is very boring subject. People doesn't want to remember. So It should be removed. when they are studying. This is not useful in daily life. Okay, so basically you are saying the curriculum should be improvised to not remember all the dates that are not very useful for us. It should be only the important information that can help us in our from learning our past mistake and getting a better judgment and decision making skills. Okay. Any other person? Good evening, everyone. I seriously want to say that history should not be removed because I don't see any point in scrapping history or the school curriculum. Reason being that those who don't learn from the past are doomed to repeat it. Through history, we can learn how past societies, systems, ideologies, government, cultures, and technologies were built, but how they operated and how they have changed. The rich history of the world helps us to paint a detailed picture of where we stand today. If we didn't have that subject, then how the next generation will know about the rights of our freedom fighters, to know why our army soldiers and fighting and getting marches for our nation and country, to know about the Said Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose,
Udyam Singh, and many more. The next generation must be the subject, because all our next generation is born of God and games. We should know about the life of our ancestors have led to our nation. History helps us understand about other culture. History helps us understand our own society. History helps us understand our own identity. History helps us on our citizenship. And history gives us insight to identify problems. So history is most important curriculum subject for our Indian education. Yes, I might tell a random person to conclude the discussion. So you might want to memorize or write down 2 or 3 points that have been spoken up. Yes. Any points? नहीं. आपका? नहीं. क्यों नहीं? You don't think history is important? Or you think history is important? History shows us models of good and responsible citizenship. History also teaches us how to learn from the mistakes of others. History helps us understand change and societal development. History provides us context from which to understand ourselves and others. Okay, and now the points are just revolving around. So I need new fresh points if you have any. For or against anywhere you want to present, but I need fresh points, something that is different from the ones spoken. Okay, is there nobody against the motion that it should be removed? Yes. If you if you are in the favor, like all of you have till now told that there are many reasons for learning history, but we all know how many students are actually interested in history. So your theoretical implications are not very well implied in the practical life. So can you suggest something that could be utilized in a practical way of learning history? History taught us that we should be living together without having among their urban will take advantage. No, I'm just wanting to ask you, how can you improvise the subject or the curriculum of history that it will be much more interesting for the students to learn? Like we all agree on this point that history is important. Okay, abhi sir jitne bhi points aapne bole, it was in the favor. So most of all agrees that history is something very important that we should study and it should stay compulsory for the students to learn. But how can you make it more interesting? Because हम लोग सब जानते हैं reality में होता ये है history class में आधे बच्चे सोते हैं. उस चीज को कैसे improvise किया जाए? How can we like what methods or measures can be taken so that it can become more interesting for the students? Story and documentaries, very good. Anybody else? By role playing. Role playing, yes. Sorry? Visual presentation. Okay, same thing. Documentaries and how Realistic approach. yes, monumental visits, yes, very good. School trip or anything that can be very effective method to improvise your learning skill. Any other points? Like it is for most of all students. The formulas can be reminded when you are solving the question. The difference between history and maths is if you have learned one formula,
You can solve at least 10 to 5 questions on that formula and you'll remember that formula. But the thing is, in history, you don't have to solve any formulas. You just have to remember the person when the war had happened, when that person has been born, when they have died. So basically, it is not as such important to remember when that particular person has birthed or died. But it is important to remember when the most important events have happened, right? Like you cannot remember all the pillars in a monumental building, remember the intricate designs that are made on the building, right? Walls. Yes, who built the walls, how much designing it has included, what all statues it has included. So वो सारी चीजें आप याद रख सकते हैं. But the dates that you are saying, it is not even a small number. Na? You have a lot of people to remember, right? You have to remember a lot of people, a lot of historical dates that the events happen. You don't just remember 1 or 2 years previous history. You have to remember thousands and thousands of years of history. So it is a kind of, you can say, a lot of data to take in, but it is somewhat pushed inside you because you're not actually taking in the data. उसको data intake करने के लिए आपको जो methods हैं, what you can suggest, being a student, you know some subjects are there that is boring, that is you're not very interested, or certain part of that subject that is somewhat of purely theoretical and you have to remember each and everything. तो उसको improvise करने के लिए क्या किया जा सकता है? Okay, yes, it can be varying, like instead of restricting it to 3 or 4 year course, you can divide it into different spectrum so that it will be helpful for each and every person to memorize a little bit that can be understandable and memorable. Anything else? Okay, I have 4 students who have not given me till now any points. What do we know? Yes, yes. Yes, exactly. Many fights have already happened. So, in a way, it also teaches you to not have that kind of fight. Like even the Russia-Ukraine war, even before it has started, it was said that if it has been like अगर ये बहुत दिन तक चला या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया रशिया ने तो World War III हो सकता है. And each and every country in this world is against World War III. Why? Because we have learned from the past 2 wars that it has done nothing but devastate our economy, devastate the people who are living. Yes, war is never the solution. ठीक है? तो ये चीज जो है ये हमारे पास से ही हमें पता चली. ठीक है? हमने इतने सारे wars लड़े लेकिन after all we are on the same stage. Everyone is on the same stage. Some people are like you cannot say that each and every country has been developed not on the standards that they put on, but for ourselves, for our own culture, we have improvised a lot, right? So वो learning आपने history से ही सीखी. And if you look at our own culture, you will find that there are references that no soldier ever in history actually wanted to fight any war. Because they have always wanted that they should be deciding peacefully without any, you can say, attacking someone attacking them. ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर लड़ाई करे. वो बस चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है, हमारा जहाँ भी घर है, वो सुरक्षित रहे. ठीक है. Is there any more points coming, or should I tell these 4 to conclude? Like it is not his historical background. I was telling like before even it started, then there were
issues raised that Russia might do that, and each and every country was worried that if the war started, then the World War III was not lagging behind. Yes. All right. So you four write down the points. You have 2 minutes to conclude this discussion. चारों को कंक्लूड करना है, साथ में अपना काम बांट के करो, चाहे तुम अकेले अकेले करो, कंक्लूड चारों को करना है. This one and these two. नहीं, वो तो पूरा करेगा, वो भी नहीं बोला है. Yes, for conclusion, let me give you some advice. जितने points बोले गए हैं, if you can remember 2-3 points, you can use that and include your own conclusion. What do you think? Include one more point of yourself. So basically, from 2 to 3 points, you can conclude the discussion. ठीक है? अब conclude the discussion का मतलब क्या हुआ? हमारा निष्कर्ष क्या निकला? तो discussion जो हमने पूरा किया, उसका question का आंसर मिला या नहीं? Whether history should be extracted from the curriculum or not. यही होता है जब हम लोग सही से नहीं करके आते हैं. Yes, before that, have I given you any detail of GD? Okay. So, how much time do we have? We have more than enough time, so let's conclude the discussion. And the meanwhile, I'll tell you how to actually perform a GD. GD में आपको group discussion में basic चीज होता है. जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर में जीडी कराया जाता है, तो उसका दो ही मेजर रीजन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वांट टू सी हाउ यू वर्क इन टीम, एंड सेकंड ऑफ ऑल, दे वांट टू नो हाउ मेनी लीडरशिप स्किल्स यू कैन डिस्प्ले व्हाइल एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टीम वर्क. ठीक है, तो ये दो चीजें वो चाहते हैं रिक्रूटर देखना आपके ऊपर. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जब आप वहां पर इनिशिएट करते हैं, ठीक है, whether you are initiating because you know the topic or because you want an extra marks from your side, initiating a GD is as risky as you can say investing in mutual funds. ठीक है, तो जब म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? लॉस होगा. ठीक है, it might happen, it might be not happen, like ऐसा जरूरी नहीं है. जब रिसर्च किया नहीं तो पता कैसे लॉस होगा? ठीक है, तो 50% चांस है कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा. रिसर्च आपने किया नहीं तो यू डोंट हैव एन एक्चुअल डाटा टू बैक अप योर. ठीक है, तो वही सेम चीज होता है जीडी को इनिशिएट करने में. जब आप जीडी इनिशिएट करते हैं, अगर आपके पास डाटा नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि वो जीडी का जो टॉपिक है उसको कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए, तो बेटर है कि आप ना करें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा. तो इट इज बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड. ठीक है, तो अगर आपको लेकिन पता है, इफ यू नो एक्चुअली लेट्स से समथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, कोई ऐसा न्यूज़ है जो बार-बार आप देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स के बारे में आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, जिससे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं उस टॉपिक का, देन गो फॉर इट एंड ऑलवेज have that confidence in yourself that you can start it because you know that information. अब उससे क्या होगा, जिसने इनिशिएट किया उसके लिए एक्स्ट्रा मार्किंग रहती है. ठीक है, क्यों रहती है? because you have taken a step forward, initiation करना आपने स्टार्ट किया. ठीक है, so whenever you are given a topic, आपको पता है टॉपिक दिया जाता है, after 5 minutes you have to start the discussion. वो टाइमर स्टार्ट कर देगा, 5 मिनट से 1 मिनट आपको नहीं दिया जाएगा. So basically कुछ टॉपिक, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया इनिशिएट करने का एक्स्ट्रा मार्किंग का, ये चीज सबको पता है. ठीक है, अब दो सिचुएशन होते हैं. सबसे पहला सिचुएशन जब आपका टॉपिक कुछ ऐसा आसान टॉपिक है जिसपे
बहुत सारे बच्चों को उस पे इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, वो इनिशिएट कर सकते हैं आपसे। तो उसमें क्या होता है, सबको एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, not shout actually, but a little louder, so that you are heard by each and every person present in that room, and ask the question to initiate. May I start the discussion? ठीक है, ये चीज इनिशिएट करने का आपने एक फॉर्मल तरीका है कि आपने एक आप कह सकते हैं एक पोएटिक सिचुएशन को, एक गड़बड़ की सिचुएशन को आपने एक फॉर्मल वे में हैंडल किया। ठीक है, नाउ टू थिंग्स विल हैपन, either somebody will say yes and you can start the discussion, either somebody might say no, I want to start the discussion. Let them start the discussion. This will give both of you a point. Let's say Akash ने यहाँ पर बोला कि no, I want to start a discussion. आकाश ने बोला कि I want to start a discussion. अब यहाँ पर सुरेश ने बोला था क्वेश्चन, तो यहाँ पर सुरेश ने अगर आंसर कर दिया कि yes, you may start the discussion, आकाश ने अगर अच्छा स्टार्ट किया तो उसको इनिशिएशन का मिलेगा पॉइंट, सुरेश को लीडरशिप शो करने के लिए पॉइंट मिलेगा बिकॉज ही हैड लेट द अदर पर्सन हैव द फेम। ठीक है, आपका लीडर का बॉस ये नहीं ना रहता है कि आप बस कमांड करें, यू हैव टू लेट अदर्स आल्सो गो विद यू। ठीक है, दोनों को ही पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी इसमें, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। सेकेंड सिचुएशन क्या होती है, जब कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जब आपको सोचना पड़ता है, 5 मिनट काफी नहीं रहते हैं सोचने के लिए। फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं फॉर एग्जांपल ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, इस पे कैसे इनिशिएट करें ये चीज बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, अगर मान लो आपको 5 मिनट दे दिए थे, 5 मिनट बाद भी कोई बोल नहीं रहा है, टाइमर हैज स्टार्टेड एंड नोबडी इज स्टार्टिंग। ठीक है, throw a question to them. ठीक है, start a discussion. If you don't know the introduction, just throw a question to your audience, that is the other members. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपने इनिशिएट कर दिया। अब क्वेश्चन का आंसर कोई ना कोई तो देगा ना, राइट? अगर एक पर्सन ने आंसर दे दिया तो पॉइंट उसको भी मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे फॉर द इनिशिएटिव। ठीक है, तो वही चीज हो जाती है। There are two things and both the time you have to show your leadership skills that you can take the team and carry them along with. Okay? Now, once the discussion has started, it should never be halted in between. ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपका लिमिटेड है। अब उसमें सोचने के लिए सब रुक जाओगे तो फिर तो टाइम ड्यूरेशन दे ना सकता, राइट? सो विद इन मान लीजिए 20 मिनट्स का रेगुलर टाइम होता है, 20 मिनट्स आपको दिए गए, 20 मिनट्स में आगे के 3 मिनट सब कोई अपना पॉइंट बोल रहा है, 3 मिनट बाद सब शांत हो गए, अगेन थ्रो अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं आपके दिमाग में, व्हेन यू हैव अ सर्टेन टॉपिक्स, नहीं भी है आपके मन में कोई पॉइंट है, पॉइंट होने की बजाय आप उसका क्वेश्चन शुरू करिए ताकि दोनों को नंबर मिले। बेसिकली यू हैव टू कैरी ऑन द डिस्कशन, कीप इट गोइंग। ठीक है, एंड इन बिटवीन द डिस्कशन दो चीजें याद रखना। सबसे पहली बात, आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स बोलने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इनिशिएट कर दिया तो वहां पर छोड़ दोगे आप, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे। यू हैव टू एटलीस्ट मेक 4 to 5 पॉइंट्स इन बिटवीन द जीडी। सेकंड थिंग, never argue with someone. You don't have to raise your voice. You never have to make a point that is criticizing someone else. ठीक है, आपको किसी से क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। अगर किसी को अपोज कर रहे हो तो बहुत ऑफिशियली बोलिए, आई माइट हैव अ स्लाइट डिफरेंट ओपिनियन देन यू। ठीक है, आई हियर यू बट आई माइट हैव अ स्लाइट डिफरेंट ओपिनियन देन यू, और आई माइट हैव सम अदर पॉइंट्स टू ऐड and not in favor of your points, that might not be in favor of your points. Officially एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसे हैंडल करना। आपकी आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, ऊंची इन द सेंस चिल्लाना नहीं, किसी भी हाल में, कितना भी कैसा भी पॉइंट बोल रहा है सामने वाला, you don't have to shout, you never should shout in front of them। ठीक है, तीसरी चीज, जब डिस्कशन हो रहा है, कंक्लूजन आपके लिए let's say it is like every आपके लिए, ठीक है, उसमें सेल्फिस्ट बैठा है, उसमें मार्क्स नहीं कर सकते,
तो कंक्लूजन कैसे करना है? कंक्लूजन करने के लिए ऑलवेज हैव अ पेन पेपर व्हेन यू आर डूइंग अ जीडी. मेक द पॉइंट्स. मैंने जो पॉइंट्स रिपीट मैं कर रही थी आपको, वो इसीलिए कर रही थी. I was turning that whole paragraph that the students were repeating into one liner. वो one liner लिख के रखो. आपको हर एक पॉइंट नहीं बोलना है, क्योंकि मान लो अगर 10% है, 20 मिनट का जीडी है, 10% 6-7 पॉइंट बोल रहे हैं, कितने हो गए? How many points? 60, 70 points. तो उतने points तो आप रिपीट नहीं कर सकते हो सारे, और कोई मतलब भी नहीं बनता है. So what you have to do, you have to write at least those points, not every point जितना आप लिख सकते हो. मान लो आपने 6-7 points किसी के नहीं लिखे, आपने 2-3 points लिखे, उतना काफी है, क्योंकि important points लिखिए, ऐसे points जो conclusion में help कर रहे हैं. ठीक है, कंक्लूजन में हेल्प कर रहा है, यानी कि अगर मान लो क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री को हटाना चाहिए या नहीं, तो इसका हाँ या ना में आंसर देने वाला वो पॉइंट आपको मेंशन करना. तो लेट्स टेक, अगर हम यहाँ पर पर्सन 2 या 3 पॉइंट्स लेते हैं, तब कितने पॉइंट्स में? 20-30 पॉइंट्स, फिर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो इसमें क्या करोगे? इसमें 1-1 ऐसे आप पॉइंटर्स रखेंगे अपने कंक्लूजन में, which would be helpful in declaring whether it is I guess for the question or no for the question. आप कम से कम 5-6 पॉइंट्स रिपीट करेंगे. रिपीट करने का मतलब क्या होता है? रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आपने पूरा का पूरा डिस्कशन सुना. You are acknowledging the points that are being made by the others. ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए पूरे मिले थे, आप बाकियों का भी पॉइंट्स सुन रहे थे. अंडरस्टूड? तो वो पॉइंट्स बोलने के बाद आपके ओपिनियन से इसका कंक्लूजन क्या निकला, हाँ होगा या ना होगा, इन फेवर और इन अगेंस्ट, व्हाटएवर द डिस्कशन कंक्लूड्स, उस फेवर में आपको बोल देना. अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ कंक्लूजन नहीं निकलता. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ डिस्कशन अबाउट वेदर लोकल सिटीज आर गुड और मेट्रो सिटीज आर गुड. तो ये पर्सपेक्टिव फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का है. तुम्हें हो सकता है लोकल सिटीज पसंद है, किसी और को हो सकता है मेट्रो सिटीज पसंद है. तो दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन, दिस टाइप ऑफ डिस्कशन डजंट हैव अ कंक्लूजन. तो इसमें आप क्या करेंगे? वी कैन नॉट कंक्लूड, इट डिपेंड्स. ये मत बोलना वी कैन नॉट कंक्लूड, ये बोलना कि अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन वी हैव so many points on both the favors in both the cases. So it is it depends on the individuality of the person, how he or she thinks about the certain cities. ठीक है, तो कंक्लूड नहीं हो पाना भी पॉसिबल है, कि हो सकता है कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो, लेकिन आपको वो चीज मेंशन करनी होगी, कंक्लूड हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, एट द एंड 2 और चीजें. सबसे पहली बात कि आप किसी को जब कोई पॉइंट बोल रहा है, आप काटेंगे नहीं उसकी बात. ठीक है, उसकी बात आपको काटनी नहीं है. सेकेंड थिंग, टाइम देखते रहना हमेशा. आप इंटरव्यू में घड़ी पहन के जाओ ना जाओ, जीडी में हमेशा घड़ी पहन के जाओ, क्योंकि अगर मान लो 20 मिनट है, 18 मिनट पे आपको वार्निंग दे देनी है अपने ग्रुप को that the time is going to up, we need to conclude the discussion. अगर 1 मिनट के अंदर डिस्कशन कंक्लूड नहीं होता है या नहीं कोई करता है डिस्कशन, आप 19 मिनट पे खुद स्टार्ट कर दीजिए डिस्कशन कंक्लूड करना, क्योंकि अगर 20 मिनट में कंक्लूजन नहीं हुआ तो ये सबके लिए डिस्क्वालीफाइंग होता है. ठीक है, the whole team will be disqualified. The whole team who are involved in the discussion will be disqualified. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, and if you cannot show it into 20-minute discussion, तो आप काम प्रोजेक्ट भी कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे. So that is why time management is very important aspect. आपको within time duration जीडी खत्म करना है. Understood? Okay, if I can remember any other point, let me tell you. In the meanwhile, let's conclude the discussion. Who will start? And we conclude all those things. That is, history tells us about the culture and civilization. History should help to understand the moral value of our country, international relations, trade, languages, etc. Whatever we learn from the history to apply in modern days. Good afternoon, everyone. To conclude this meeting, we have all heard many points about this topic. That history tells us about the sacrifice that have made so that we can respect that. Or history teaches us of others' mistakes
so we can learn and do not commit it again or repeat it. It also understands our mistakes too. History teaches us about different cultures which have been running throughout this time. And in my opinion, yes, history should be included in the curriculum of the school, as it as if a building is if a need if for a strong building there should be a strong base. So for the better future of anyone, there should be a learned about the history. Ruchi. Your turn to conclude. Pocket से हाथ ourselves because why वहां भी डर लग रहा है बोलने से। By understanding past behavior of people society. Yes, I'm expecting a better response from your side in the next class when we have another discussion. And remember, there's a difference between discussion and debate. Debate it is a speech that you write. Open the curtains. It is a speech that you write, but it is either on the for the motion or against the motion. Speech में क्या होता है? आपको अपना point बोलने के लिए negative positive दोनों बताना होता है. But debate में आप एक ही तरफ रहेंगे, या तो for में रहेंगे या फिर against में रहेंगे. And debate में एक चीज है कि आपसे audience question कर सकती है. After you have finished up your speech, the against person, जैसे मान लीजिए for वाले person ने अपना speech बोल दिया, अपना point of view रख दिया, तो against वाले person उनसे question कर सकते हैं. ठीक है? That is why I was starting in the initiation for the motion and against the motion. So I can give more topics to you, but if you can go ahead and have a proper debate, that will be much better. Also, before we end, आपका college में speech competition हो रहा है, information आई है? Yes. Yes. So how many of you are participating? Anybody else? Reasoning? Yes. See, the thing is, you are asked here to decode the problems. See, तो प्रॉब्लम्स आपको बताने के साथ साथ आप प्रॉब्लम बताते हुए स्टार्ट करेंगे एंड एट द एंड एट द कंक्लूडिंग टाइम आप उसका सॉल्यूशन हाउ टू डिकोड दोस प्रॉब्लम्स you will include those things in the
कंक्लूडिंग पार्ट और इन द लोअर पार्ट ऑफ योर स्पीच, ठीक है। तो उस पार्ट में आप अपने तरफ से क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, रिमेंबर टू सजेस्ट नॉट टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। तो आप मे वर्ड यूज करेंगे, शुड वर्ड यूज करेंगे, कैन वर्ड यूज नहीं करेंगे, विल वर्ड नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यू आर गिविंग एग्जैक्टली, यू आर formally giving a suggestion to people that we should do these things, we may do these things to solve or decode the problems of socio-economic problem due to COVID-19, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा। Also, if you have the ready the format, you can just go ahead and speak in front of everyone, not right now in the class or in front of me, so that I can convey this message to Sana ma'am that you have prepared a moment. ठीक है। Anybody else? नहीं नहीं, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? तुम ही से पूछ रही हो। Why are you not participating? At the end of this month. तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो? टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है। हाउ इंटरेस्टिंग डू यू वांट द टॉपिक? See, the thing is, this topic is very much serious. It is not, you cannot include a fun fact, but you can. Yes, it is not something to have a fun fact, but yes, you can include stories. It might be sad stories, but you can include the sad stories. Okay? You cannot make it interesting, but you can make it rememberable. ठीक है, आप यादगार बना सकते हैं उस चीज, ठीक है। आप भले उसको फन नहीं बना सकते हैं, एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बट आप उस चीज को, जो स्पीच आप बोलेंगे, हाँ, उसको यादगार आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई एटलीस्ट एक्सपेक्टेड 5 ऑफ यू टू प्रेजेंट, और यहाँ पर एक ही बच्चा प्रेजेंट कर रहा है। नहीं, डोंट पोक हिम, आई एम आस्किंग यू टू। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर भले कम है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Okay. How many students actually want to participate? Or you are just afraid to go in front of the audience? देखो, टॉपिक तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कितना भी एजुकेशनल सेक्टर में आप दे रहे हैं स्पीच, तो टॉपिक तो इसी तरीके का मिलेगा, ठीक है। क्लास में मैं भले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक दे देती हूँ, दैट इज जस्ट बिकॉज यू हैव सम इंटरेस्ट। Decoding post-COVID socio-economic problem.